रॉनी और जरीना स्क्रू वाला, ये दो नाम। ये अकेले ही चल पड़े थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हिम्मत थी अपनी खुली आंखों से नामुमकिन लगते हुए ख्वाब देखने की। कुछ ने कहा शायद हो ना पाएगा, मगर ये 1.5 अक्षर आग जैसे नहीं, अगर जाग जाएं तो आग हैं। बिल्कुल सही कहा गया है इस परिवार के लिए। इन 1.5 अक्षरों से बने हम, इन 1.5 अक्षरों से बने तुम, और इन्हीं 1.5 अक्षरों से बना ये स्वदेश परिवार। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। स्वच्छ भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत की मशाल लिए हुए पिछले कई वर्षों से तत्पर है स्वदेश फाउंडेशन। तुझे है पुकारा। हजारों गांव वासियों के घर बसे, बच्चों को शिक्षा का लाभ मिला, बेटियों ने सफलताओं की राहें चुनी, आदिवासियों के घरों में भी उम्मीदों की रोशनियां जली, पीने को और स्वस्थ जीवन जीने को पानी मिला, खेत खलियान लहराने लगे, महिलाओं ने जिम्मेदारियों की मजबूत डोरें थामी, लौट के शहरों से युवा अपने अपने घर को आए। सिर्फ इंसान ही नहीं पर पेड़ पौधे पशु पक्षियां भी मुस्कुराए। ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था, और इस साल तो जैसे मुसीबतों के सैलाब का सामना करना पड़ा है। कोरोना महामारी और हाल ही में आए हुए चक्रवात जैसे कठिन परिस्थितियों में भी स्वदेश फाउंडेशन की टीम रुकी नहीं। ऐसे समय पर खुद पे आई मुसीबतों की परवाह न करते हुए रायगढ़ जिले के वासियों की परवाह और सेवा में डटे रहे। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, सदा चले थके न तू, रुके न तू, झुके न तू। फाउंडर्स की दूरदर्शिता रही। स्वदेश के इस मिशन में कई समर्थों का सहयोग भी रहा, पर इस फाउंडेशन के असली नायक है यहाँ काम करते हुए कर्मचारी। स्व से बने देश, स्वदेश आओ मिलके बदले। तुझसे जिंदगी। The Swades Building Livelihoods campaign raises funds to build livelihoods of 15,000 plus of the most needy households. Tribals, migrants, daily wage homes and others, the poorest of the poor families in rural Raigad and Nashik districts of Maharashtra. The aim of this telethon is to create self-sustaining communities as we build their capacities, strengthen inputs and market linkages, and ensure that every household earns at least 2 lakh rupees every year through a basket of programs. One fact that I must point out right at the start, that every 1 rupee you contribute to Swades, the farmers will get 3 times that, 3 rupees for every one. So basically, so your 1 rupee goes to the farmer as 3 rupees. And with Zarina and Ronnie there, the efficiency of the use of that funds will be outstanding, I assure you. We believe deeply that poverty is material but also mental, and therefore we believe in rural empowerment through various means, building various institutions, one which we will be talking about as we go along is, and as I said, the real magic of Swades, the uniqueness of Swades is our 360-degree model, one of which, and maybe our pinnacle, is Livelihoods, which we're discussing today. Zarina's given a very clear idea of what we do. I think the aspect of being an execution foundation really means, like anybody else in the social form, I think there's incredible work being going on by many people. But our ability to be right in front allows us to be nimble, allows us, most of us in the NGO space think this is what the community wants and we go out to deliver that. We rarely look at what the community may want in return. We got to build their trust. We wish Swadesh and the very best for the Building Livelihoods program. This is really a critical program, and I would encourage everybody to join it and be part of it with Swadesh. When you actually start putting the holistic development model, which we have been promoting, obviously that is something which people like it. So I'm sure Swadesh and others can work together and make sure that we can actually develop together a most sustainable livelihoods, most sustainable development model,
most sustainable societies. This initiative of Swades building livelihoods, I am being told that it is going to cater to 15,000 families to rebuild their lives and to seek self-employment. This is a very good initiative. I would like to appeal to all citizens to generously contribute towards this. I think the entire landscape, if you like, of what Swades wants to do is really upliftment of rural livelihoods. Swades has helped people move back from large cities where they do pretty menial job of watchmen earning 10-15,000 rupees to having a much better livelihood back in the village. Zarina, last word with you. Thank you. Big thank you to all of you, really, for all this effort, and big thank you for all the donors and all the donors that are to come. Really, there are a lot of people that need help, and I'm thanking you in advance for all the donations you're about to give us. Raigad in the heart of Maharashtra, the capital of the former Maratha Empire. With fertile soil, ample of rains, but limited to paddy farming, limited health, educational resources, lack of access to drinking water, where villagers, especially women, have to walk miles daily to fetch water. Lack of sanitation and opportunities to emerge out of poverty. It is here that a quiet revolution is taking place. What began in a few villages is now a movement to provide sustainable livelihoods in over 2,500 villages. The Swades 360 model looks at holistic solutions. The foundation ensures that the health, nutrition, water, sanitation, education and economic development of the villagers where they work is looked after. Swades is providing means to people to build a sustainable livelihood back in their villages. The foundation looks after water and sanitation, health and education, nutrition as well as economical development. Swades Foundation has a unique 360-degree approach to rural development, a holistic model of development which encompasses water, drinking water, sanitation, an individual household toilet, education, health and livelihoods. But above all, we believe that the community needs to be empowered and enabled to take charge of their lives, to really remove what we call this mental poverty, the sense of hopelessness, and allow them to not only help themselves but also help others. That's our dream, and we call it Swa se bane des, Swades. The primary focus of the Swades Foundation is uplifting rural poverty, both mental poverty and physical poverty. We want rural India to be in control of their own destiny, and that's the real focus of the foundation. And finally, is to create a model that others can look at and replicate. To date, in the last 7 years, the Swades Foundation has helped to improve over 5 lakh lives. Swades works for the tribals, migrants, daily wagers and other poorest of poor families in rural Raigad and Nashik districts of Maharashtra, aiming to economically strengthen them by providing diverse means of livelihoods. Many youth in several families migrated to cities in hope for a better life. But most end up with struggling life back in cities. They wanted to come back to their villages, but were not sure of the opportunities back here. But then they contacted Swades Foundation and their lives changed. How? Let's take a look. Since 2008, Sujata Kadam lived in Mumbai. Her husband Pradeep Kadam used to work as a contract labourer with Mumbai's top real estate company. But they were worried. There was no job security and a fear of what the next day would bring.
It was Pradeep's longing for his village Lonere that got them thinking. Sujata, however, was anxious about the life back in a village. मेरी शादी 2008 में शादी हुई थी और तभी से हम लोग वहीं पे रहते थे। तो फिर हम लोग ने सोचा यहाँ पे आने का चालू था, गांव में आना चाहते थे लेकिन गांव में कुछ साधन नहीं था। फिर हम लोग ने सोचा कि वहाँ पे स्ट्रगल भी बहुत चालू था क्योंकि मेरे हस्बैंड लोड़ा में काम करते थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे। तो हम लोग वहाँ पे खाएंगे क्या, ये हम लोग मतलब हमें टेंशन था कि हम लोग करेंगे क्या। और उनको पगार भी 25,000 पगार था, उतने में हम लोग बच्चे का करेंगे या फिर घर का करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग को स्वदेश के बारे में मालूम पड़ा। स्वदेश की ट्रेनिंग चालू थी। फिर इन्होंने 2-3 दोस्तों ने कहा कि ट्रेनिंग चालू है स्वदेश का, तो हम लोग का स्वदेश से कांटेक्ट हो गया। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना ये दीजिए, योगदान दीजिए। फिर हम लोग ने सोचा कि क्यों नहीं, अगर ये हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे, तो हम क्यों ना करें। 2017 में फिर उनके साथ हम लोग यहाँ पे आए। पहले स्टार्टिंग में हम लोग ने 6 बकरी और 12 बच्चे लिए। उनके साथ हम लोग ने बिजनेस चालू किया। स्टार्टिंग में तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था उसके बारे में, हम लोग नए थे। लेकिन स्वदेश की टीम यहाँ पे आती थी, सर आए थे, उन्होंने हमें मदद की कि क्या क्या करना है, कैसे क्या प्रॉब्लम है, उसे कैसे हल करना है, वो सब उन्होंने हमें बताया। Sujata told us about how the Swades Foundation helped in every possible way, including providing the vaccines to be given to the goats. They have been back home in Raigad for over 3 years, and now the couple rears 65 goats. Sujata says she is now an expert in rearing goats, and their business has also grown. They even supply goats to the Swades Foundation, which in turn uses them to help others. अभी 2 साल में हम लोग इतने प्रॉपर हो गए कि हम खुद बता सकते हैं कि उन्हें बकरी अगर आपकी बीमार हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अभी हम लोग का बिजनेस अच्छी तरह सेटअप हुआ है। अब बाहर के जो बकरी लेने, वहाँ से बाहर के भी लोग भी यहाँ पे आके हमारे पास से बकरी लेके जाते हैं और एज अ वेंडरशिप हम लोग दूसरों को बकरियाँ सप्लाई करते हैं। जब हम लोग स्टार्टिंग पे यहाँ पे आए थे तभी हम लोग को बहुत लोग हंसने लगे थे कि अरे ये लोग मुंबई छोड़ के यहाँ पे आए, ये लोग क्या करने वाले, इनका पूरा ज़िंदगी मुंबई में बीत गया था, यहाँ पे आके ये लोग क्या करने वाले। लेकिन आज की डेट में जो हम लोग पे हंस रहे थे वही अभी हमसे बकरियाँ लेके जा रहे हैं। As we travel in this area, village after village, there are success stories. Lives transformed because of Swades's efforts. 10 kilometers from Sujata's village is the village Divil. Vikas Kadam runs a poultry business. He used to work in Pune as a labourer, but after working there for 3 years, he felt it was time to go back home. But he was not sure what he would do there. And then, during one holiday when he was back in his village, he stumbled upon a meeting of the Swades Foundation. It was here that he learned about poultry farming. मी पहिला पुण्यामध्ये कामाला होतो. मी इथं 3 वर्ष कामाला होतो. मला पगार होता 4,000 रुपये. त्याच्यामध्ये काय मला इथं भागत नव्हतं. भाड्यात जायचं 1,500 रुपये. खाणं पाणी काय भागत नसायचं. मग त्याच्यानंतर गणपती सुट्टीत मी गावाला आलो तेव्हा स्वदेशची आपली मीटिंग चालू होती. 50 पिल्लं घेतली होती स्वदेशमधला. तर त्या 50 पिल्लांमध्ये मी 300 रुपये विकून मला 15,000 प्रॉफिट झाला होता. 5,000 रुपये मला खर्च झाला होता. त्यातनं मला 10,000 रुपये राहिले होते. मग ते मला इंटरेस्ट वाटला त्याच्यामध्ये. मग मी स्वदेशकडनं अशी पिल्लं घ्यायला लागलो. सतत कंटिन्यू चालू ठेवलं. त्यातनं मला चांगला पगार. तिकडे पुण्यामध्ये 4,000 होता, मला 10,000 पगार असायचा.
10,000 मला भेटायचे त्यातनं. स्वदेशनं मला म्हणजे पिल्लं माझ्याकडे असताना त्यांना असं वाटलं की बाबा हे काहीतरी करू शकतात. मग मी त्यांच्याशी बोललो स्वदेशी, मग मी हे करू शकतो, मला पण काय व्यवसाय नाही आहे, इथं काय नाही. तर ठीक आहे, मला त्याने अँकर म्हणून बनवला. अजून मला त्यातनं स्वदेशनी माझा विश्वास दाखवला की मी ह्याच्यातनं अजून काही करू शकतो पुढं. आणि मलाही त्यातनं विश्वास वाटला होता की मी पुढं बरंच काय करू शकतो. असं असताना मी जवळजवळ 30,000 तरी पक्षी दिलेले आहेत. स्वदेशनी मला दिलेले आहेत, ती मी लोकांना असं 30,000 पक्षी वाटले आतापर्यंत. आणि त्यातनं जे काय मला पैसा आला त्याच्यामधनं मी ऑटो रिक्षा घेतली. अजूनही मला पुढं काहीतरी वाढवायचं. मी 2 छोटी पोल्ट्री होती, त्यानंतर मी अजून दुसरी एक पोल्ट्री बांधली. After successfully breeding hens, he even bought an auto rickshaw from his earnings to supplement his income. Now his wife primarily looks after the poultry business while Vikas drives the auto rickshaw. The money from this is a secondary source of income for the family. Santosh Bhilare is 22 years old. He finished his education in 2015 and then worked at a store in Mumbai. He was earning about rupees 9,000 per month but was struggling with life in the city. In 2018, he joined his uncle Manohar Jadhav, who with the help of Swades was successfully farming in their village, Divil. गांव में कुछ जॉब नहीं था, पैसे कमाने का कुछ साधन नहीं था, इसलिए मैं बम्बई चला गया. बम्बई में मैं स्टोर कीपर का काम करता था. तो वहाँ पे 9,000 पेमेंट था मुझे. वहाँ पे कुछ परवड़ता नहीं था, जॉब की कुछ गारंटी नहीं थी, कभी भी निकाल सकते थे. तो वहाँ पे मैं 1.5 साल काम करता था. बाद में गांव में आ गया. इधर मेरे अंकल मनोहर जाधव, उनके साथ बातचीत हुई. वो भी पहले से ही खेती करते थे. बाद में मुझे भी वो खेती करना अच्छा लगता था और उनके साथ कुछ दिन काम करने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा. बाद में स्वदेश के कुछ लोगों के साथ मीटिंग हो गई और उन्होंने कुछ ट्रेनिंग दी. मुंबई में जितना मुझे पेमेंट आता था उससे ज़्यादा मैं अभी गांव में इधर कमाने लगा था. तो मुझे इधर ही गांव में अच्छा लगने लगा. वो मेरे अंकल है, वो पहले से ही 10 साल पहले से खेती करते थे. उनका अच्छा मुझे गाइडेंस मिला और उनके साथ स्वदेश फाउंडेशन का ही अच्छा गाइडेंस मिला. तो मैं अभी गांव में इधर रह के हम 3-4 लोग मिल के खेती करते हैं. उसमें हमारा एक साल का 12 लाख रुपए इनकम रहता है. उसमें 3-4 लाख रुपए खर्चा जाने के बाद हमें अभी 2.5 से 3 लाख साल में प्रॉफिट मिल जाता है. One of the important agendas of the foundation has been to help empower women to ensure they are financially independent. The foundation has given a new lease of life to families across the region. Asha Khedekar has 2 children. She wanted them to have the best education, but she wasn't able to afford it. After her husband met with an accident in 2018, it was Swades that ensured that she didn't have to pull her children out of school. मी गृहिणी आहे आणि शेती हा व्यवसाय आहे माझा. आणि त्याच्यासोबत मला स्वदेशच्या मार्फत पहिलं म्हणजे कसं बँकेकडून लोन घेऊन की जोडधंदा संसाराला हातभार 2 पैसे कसे मिळतील हे पहिलं ज्ञान मला स्वदेश कर्मचाऱ्यांकडून मिळालं. म्हणून प्रथम मी स्वदेशची खूप स्वागत व अभिनंदन करते आणि त्यांना धन्यवाद देते. तर म्हैस घेतली, त्या म्हशीपासून मला सकाळ संध्याकाळचे म्हणजे 7 लिटर दूध मिळायचं. त्यातून दिवसाला म्हणजे एक दिवसाचं पेमेंट म्हणजे 200-250 रुपये व्हायचे. वर्षाचं उत्पादन मला महिन्याचं 6 ते 6,500 रुपये, वर्षाचं निदान 75,000पर्यंत मी वर्षाचं उत्पादन दुधातून काढायची. आणि त्याच्यातून माझ्या म्हणजे घर प्रपंचासाठी खूप मदत झाली. माझी 2 मुलं इंजिनिअरला असताना
मला त्यांचं ॲडमिशन करणं अशक्य होतं. ते मला इजी म्हणजे कुठला त्रास न जाणवता मी माझ्या स्वतःच्या मेहनतीवर, माझ्या मिस्टरांच्या पगाराचे आणि माझ्या मेहनतीचं फळ घेऊन मी त्यांचं ॲडमिशन, येणारा महिन्याचा खर्च भागू लागले. आणि खरोखर मी तर म्हणते आम्हाला म्हणजे जी आमच्या मनात महिला गृहिणी चूल आणि मूल सांभाळण्यापेक्षा जी आमच्या मनातून भीती काढली तर स्वदेशकडून. आणि त्यानंतर मी दुसरी म्हैस घेतली त्या टप्प्यात. त्यानंतर परत आणखी इच्छा माझ्या वाढू लागल्या की आणखी मला कसे अधिकाधिक घर सांभाळूनच 2 पैसे कमवता येतील, म्हणून मी स्वदेशकडून पाईपलाईन केली आणि पाईपलाईनीतून कलिंगड लागवड केलं. त्याच्यातून मी खर्च स्वतःचा 15,000 रुपये केला स्टॅटला. मला 3 महिन्यांनी 50,000 रुपये त्याच्यापासून उत्पादन मिळालं. म्हणजे खर्च निघून मी 30,000 रुपये कमवू शकले 3 महिन्यामध्ये. मुलांचं शिक्षणही मी म्हणजे मला म्हणजे कुठली अडचण नाही आली मुलांच्या शिक्षणात. माझं रेग्युलर टप्प्याटप्प्याने कसं चालू राहिलेलं. दोन्ही मुलं माझी, एक मुलगी IT इंजिनियर आहे आणि मुलगा मेकॅनिकल इंजिनियर आहे. Asha's story is symbolic of how a little help goes a long way. Her 2 children are now studying to be engineers. She herself has become a member of the Gram Panchayat in the Kangule village. This is a woman who has come a long way from being a shy, retiring homemaker. Today, she is a confident woman who is showing others how to forge a similar path. Swades is fulfilling a need, a gap that is hugely needed. Pandemic-related statistics show that the number of daily wage workers who has lost their jobs, contribution of rural livelihoods to national GDP. The need for sustainable livelihoods that stem the tide of migration is now more than ever. Now, because of Swades, people can have comfortable life which is also financially viable right in their villages within the comfort of their own people. माझ्यामध्ये असा विश्वास निर्माण झालेला आहे की स्वदेश आहे तर काही होऊ शकतो. तसंच तुम्ही स्वदेशलाही धरून तुम्ही काही करू शकता. तर मी म्हणते माझ्यासारखी गृहिणी, अशा बहुतेक गृहिणी मी जर केलं तसं मेहनत करून केलं तर तुमची साथ असेल तर आम्ही म्हणजे महिला अधिक त्याच्यात प्रगती करू. आणि तुमची साथ आम्हाला पाहिजे. तुमच्या सोबत राहूनच आम्हाला ते सर्व महिलांना सक्सेसफुल म्हणजे सक्षम करायचं है. अब मैं भी अभी ये सब कुछ सीख गया हूँ. अभी मेरे को 3 साल हो गए खेती में और मैं अभी और लोगों के साथ जुड़कर मैं अलग 2-4 जन को मिलकर और हम खेती बढ़ाएंगे. जो हमें उंगलियां दिखा रहे थे आज वही लोग हम लोग पे नाज कर रहे हैं कि बाबा हाँ इन लोग ने कुछ तो यहाँ पे आके करके दिखाया है. इसलिए हम लोग कहते हैं कि स्वदेश है तो सब संभव है. Still, a lot more needs to be done. And there are still thousands of such people who need your support.